नमस्कार, गुड इवनिंग टू ऑल। आज के इस पीवी तिवारी लेक्चर सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ है आज वैद्य रश्मि शर्मा, जो कि जोधपुर राजस्थान से है। तो सबसे पहले इस पीवी तिवारी लेक्चर सीरीज के इस अवसर पर हम लोग भगवान धन्वंतरी की वंदना से इस सत्र का आरंभ करते हैं। तो मैं धन्वंतरी वंदना को शेयर करती हूँ और इसके बाद हम लोग आज का जो हमारा विषय है लाइक इनफर्टिलिटी और हमारे आज के जो गेस्ट स्पीकर है उनके बारे में भी मैं आपको उनका इंट्रोडक्शन करा दूंगी। सो आप सभी वैद्यों का इस प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। शंखं चक्रं जलौकां दधतमृतखडं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्म स्वच्छानुहृद्या शुकपरिविलसन् मौलिमं पूजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गम् कडितडविलसं चारुपीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढि दावाग्निलीलम् निखिलगदवनप्रौढि दावाग्निलीलम्। का स्वागत है इस सत्र में। और सबसे पहले मैं यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी वैद्यों का भी स्वागत करती हूँ। और हमारे साथ आज का हमारा जो विषय है इनफर्टिलिटी को लेकर हमारे साथ अपने व्यूज शेयर करने वाली है डॉक्टर रश्मि जी। डॉक्टर रश्मि शर्मा, आर यू देयर मैम? यस मैम। यहाँ पर स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर रश्मि जी के बारे में कुछ उनका इंट्रोडक्शन कराना चाहूंगी। So Dr. Rashmi is working in the department of PTSR since last many years, and now she is in the College of GIPSMR in Jodhpur. So I would like to invite you, ma'am, for this session, and it's our great honor to be with you. So I welcome you, ma'am. Dr. Rashmi is a very well-known name in the field of gynecology. She has published various articles. She is working as a editor or in journal. So she has published various talks, or also she has delivered various talks on Akashvani, विविध भारती। तो ऐसे ही जानी मानी हमारी ये डॉक्टर रश्मि जी है। तो उनके साथ हम लोग आज का ये हमारा सत्र यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं। जैसे कि हमें पता है डॉक्टर पीवी तिवारी मैडम के बारे में, तो हम आप सभी जानते हैं। जैसे हम लोग जो भी कभी गायनिक की कुछ बात करनी होती है तो सबसे पहले तो हमारे पास जो नाम आता है तो पीवी तिवारी मैडम की किताब पढ़कर ही हम लोगों ने सबने गायनेकोलॉजी सीखा है। और जैसे ही उनका देहांत हो गया था तो उसके बाद हमने इस सीरीज का आरंभ किया था। लगभग यहाँ पर हमारे साथ अभी तक 12 से 15 हमारे जो गेस्ट स्पीकर्स है उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। तो आज का हमारा विषय इनफर्टिलिटी और उसमें स्पेसिफिकली ओव्यूलेशन फैक्टर्स के बारे में डॉक्टर रश्मि अपने व्यूज शेयर करेंगी। और आप सभी का स्वागत है। बाद में सेशन के बाद हम
लोग यहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स के साथ भी डिस्कशन करेंगे। यस मैम, A very we can good. start. Yes, Yeah, yes. ma'am. Are you listening? My voice is clear? Yeah, your voice is clear. You can share also. Okay. Now okay मैम, just उसको थोड़ा enlarge करिए। So many slides are coming. थोड़ा एडजस्ट करिए ना, ओके बस थोड़ा सा उसको मैक्सिमाइज करिए। So our today's topic is ovulation factors in infertility. First of all, I want to thank the organizer who has given me the opportunity to speak in front of you. So today we are discussing a very one of the very burning problem in today's era. As we see, the patients of infertility is increasing day by day, and as you know, there are so many factors that is affecting the female infertility, and out of that, ovarian factor is one of the main cause. So we are focusing on this topic only. So what are the factors that is affecting a normal process of ovulation? So, ma'am, can you share the screen? It is possible for you? Hello. Is there any problem मैम? So, so many slides are coming, ma'am. One slides not coming. That's. So first, the infertility. As we all know, what is infertility? It is inability to conceive within 1 or more years of regular, unprotected sexual coitus. So there are so many factors that is affecting the infertility, and the important factors are the general health conditions, some genetic causes, lifestyle. This is the main factor that is mainly affecting the fertility potential of the couple. So we have to, when a patient is suffering from infertility, we have to keep so many things. We have to pinpoint what are the lifestyle she's having, whether what are the working hours she's having, what are the food she's eating. So that is our main concern. Then age. Age is again a very important factor, because nowadays, because of so many things, the age of marriage is increasing day by day. The couple who is married after 30 years, the fertility rate will be decreasing. After 35, the fertility potential will be very less. So we have to consult the patient, we have to educate the patient about the age. Yeah, if they are planning, if they are coming to our OPD and still they are thinking that after 1 or 2 years we will go for this family planning and all. So we have to advise them that the age, as the age is increasing day by day, the fertility potential will be reduced. So age is again a very important factor while we are when the patient is coming to our OPD. So what is anovulation? So the main thing is when there is a problem in producing the age, in the formation, in the function also.
So the condition in which there will be a no follicular development, there is improper rupture of the oocyte, all these conditions will come in anovulatory cause. According to Ayurveda, uh, the disease Vandhyatva, we can consider, as we know, there is a four essential factors for conception: Rutu, Kshetra, Ambu, Bijana. So here the bij, the stree bij is not functioning properly. So bij doshti is considered as one of the factor for infertility, and along with this, abnormalities of kshetra. Kshetra from where you can consider uterus. So one of the main factor for Vandhyatva is if the woman is suffering from any types of yoni vyapata. So as we see, all the three rogas are classified into two headings: yoni vyapadas and arthovikaras. If she is having any types of yoni vyapada, the quality of beach, stree beach will be affected by this. Now we will see the prevalence. What is the prevalence of infertility? So as you see, the worldwide the ratio is around 10 to 15%. Ma'am, I as share per something. WHO, Dr. Rashmi, I will share this slides okay, ma'am. Okay, ma'am. because it is not much clear. So I will share. Okay, ma'am. Yes, ma'am. Can you go to prevalence slide? Yeah. Yes. Hmm. So as per the WHO data, the prevalence of primary infertility in women in India is around 11.8%. And the prevalence of ovulatory disorder is around 40%. And out of this 40%, one of the leading cause of unovulation is PCOS. We all know what is PCOS, that is polycystic ovarian syndrome. And other that includes luteinized unruptured follicles, less ovarian reserve. All this comes under 15%. So out of our ovulatory factor, the main leading cause is PCOS. Next slide. So in this slide, you can see what are the main reason for ovulatory dysfunctions. So anovulation or oligovulation is the leading cause. Then second one is luteal phase defect, then luteinized unruptured follicles, and the last one is decreased ovarian reserve. Next. So what are the causes of anovulation? As we all know, the total menstrual cycle. The menstrual cycle is again divided into endometrial cycle and ovarian cycle. The menstrual cycle is totally under the control of hypothalamus pituitary ovarian axis, along with the proper functioning of thyroid and adrenal gland. If there is any deformity, any dysfunction in this axis along with these two glands, that ultimately affecting the normal mechanism of menstrual cycle, both endometrial cycle and ovarian cycle. So what are the important causes of anovulation? So I already told you around 85% is because of the polycystic ovarian syndrome. So what are the causes of PCOS? That we will discuss in the next slide. The other causes are previous.
Yeah. The other causes are hypothalamus or pituitary dysfunctions, prolonged stress. So this is our main thing to focus on this. If the uh, patient is working or she is having any type of psychological or work stress, so that ultimately affecting her potential functioning of fertility. Then endocrine disorders, premature ovarian failure is also one of the reasons. In premature ovarian failure, the ovaries start functioning before the age of 40 and the low ovarian reserves. Next. So here are the some points that we have to concentrate while taking the history, taking the fertility history means duration of infertility, from how much time she is suffering from this problem. Then obstetrical history, whether she is having primary or secondary infertility. That's for that we have to ask her obstetrical history. Then menstrual history, detailed menstrual history. You have to take what is the age of menarche or regularity and the pattern of menstrual cycle, whether she is having regular or irregular cycle. Next. Then we have to ask about the contraceptive history, whether she is using any type of hormonal contraceptive before. Uh, then history of medical illness, family history, gynecological history, history of STI and all. Then other history of ovulatory dysfunction if she is having any type of cyclical pain she is having or hot flushes, galactorrhea or stress. Next. So now coming to the symptoms of anovulation. What are the symptoms she will have that is suggestive of anovulation? The patient will have irregular menstrual cycle, or she will have amenorrhea, hirsutism, acne, or galactorrhea. So how we will evaluate? So here are the some hormonal tests which will be helpful for the diagnosis of anovulation. So in hormonal um, study, we will include FSH, LH, thyroid, serum prolactin, total testosterone, and follicular study by USG. Next. Now coming to the PCOS, because it is the one of the major cause of anovulation. So what is PCOS? That already you know. The patient suffering from PCOS will have multiple small cysts in the ovary, and there will be a excessive amount of androgen and estrogenic hormones. Next. So what are the causes of PCOS? The family history will be there, sedentary lifestyle, and it is more common between the age 50 to 30 years. So you can see this is the most fertile and reproductive age, and at this age, most of the female is suffering from PCOS. So what are the common symptoms of PCOS? So infertility is one of the main symptoms. Then it is coming to the facial hair, irregular periods, acne, and weight gain. Next. So what are the reasons? When the patient is having PCOS, she will have oligo or anovulation. She will have endometrial hyperplasia, infertility, hyperandrogenism, glucose intolerance, and depression and anxiety. So it is a complex disorder. PCOS is a complex disorder in which she has to suffer from so many things. Next. Now we will discuss the other causes of anovulation, that is around 15%. So it is classified into three, that is decreased ovarian reserve. So in the ovarian reserve, there will be low level of AMH. So when the patient is coming to our OPD, we will see so many women, the AMH is done.
Why we are doing AMH, that is anti-Mullerian hormone. Why we are doing for the diagnosis of ovarian reserve. If it is between 0.2 to 0.7 ng per ml, it is considered low. Now coming to the second one, that is luteal phase defect. So there is an improper functioning of corpus luteum, and as you know, corpus luteum, if there is no proper functioning of corpus luteum, the progesterone hormone will be less. The next is luteinized unruptured follicle. It may be because of the some pelvic causes such as pelvic endometriosis or hyperprolactinemia. Next. So here are the 4 essential factors for conception. That is Rutu, Kshetra, Ambu and Beach. So here beach, as you know, by Acharya Ghanekar has classified this beach into 2, Antar Pushpa and Bahir Pushpa. So Antar Pushpa is considered as ovum and the Bahir Pushpa is considered as a menstrual blood. So here the Antar Pushpa Dushti is occurring. That's why she is suffering from infertility. Next. So here are the main 6 types of Vanditva given by Acharya Harit, Kakavandya, Anapatya, Garbhastravi, Mritavassa, Balakshaya, and unexplained. Next. So, what are the causes of anovulation? So, the role of Tridosha. As we know, these Tridoshas are our basic fundamentals of Ayurveda. So, without Tridosh Dushti, nothing will occur. So, in anovulation, what are the role of Tridosha? So, Vata. So Vata is responsible for the proliferation and division of cells. And it is also responsible for the rupture of the follicles. If Vata Dushti will occur, if the maturations and development of follicles is okay. But if the Vata is not functioning properly, there will be no rupture of follicles. Pitta, as we all know, Pitta and Arthavar Sama Gundharmi. So Pitta is essential for the conversion of androgen to estrogen and for the maturity of the follicles. And Kapha is required for the nutritive factors for the proper functioning and growth and development of the ovarian cells. Next. As the PCOD and PCOS is one of the main reasons for anovulation. So here I have given some more concentration regarding the PCOD. So here is the one Ayurvedic, as we know, there is no direct correlation of PCOD or PCOS in our Ayurvedic terminology. Some have correlated with Pushpagni Chatharini and some have correlated with Arthokshay. So here is the clinical features of Pushpagni Jatharini. So yeah, Vritha Pushpam we can correlate anovulation. Yathakal Praprashyati means then the menstruation is regular. Menstruation is regular, but here there will be a improper functioning of Antar Pushpa. And Sthula we can correlate with obesity and Loma Gandaha. So you can correlate with the hirsutism symptoms. Next. So what are the nidanas? So here I have discussed only the nidanas which is responsible for a bijata. So Asrukudosh is considered as a nidana. Avran of Ardhavaha Srotas is also responsible for this. The third one is dietetic, means Ahara Dushti. So here we have to concentrate more because the dietetic habit of the patient is we have to consider whether she is taking a healthy diet or she is taking viruddha, mithya, ahar and all. Then Mansik condition of the patient is also very important. In Mansik Nidanas, we have to consider whether she is having any type of stress, any type of bhay. The psychological condition of the patient we have to consider.
Then Acharya Kashyapa has given a special nidana, that is, if we are doing Tikshna Virechan in Mridukoshtha woman, so we Vata get aggravated and it will lead to Bijopaghat. So while doing Panchkarma, we have to keep all these things mind, because Nari already considered as a Mridu. If we are giving any type of Tikshna Virechan, it will lead to Bijopaghat. Next. So these are the Samprapti Ghataka. It is Vata Pradhan Tridosh is responsible in Dushya, Rasa, Rakta and Artav, because some Acharya have considered Artav as a Upadhatu of Rasa and some consider as a Upadhatu of Rakta. In Srotas, Rasavaha and Artavaha Srotas, and Udbhav Sthan is Amashay and Pakvashay. Next. So this is the probable samprapti of Vandhyatva. We will not discuss these things. Next. Now coming to the management, how we will manage this unovulation. So as we know, the Agni Mandya is considered as one of the main reason for Vandhyatva and all type of disorders. So we will concentrate on Agni Deepan and Amapachan. So for Agni Deepan, we are giving Deepan Pachana Yoga. So here are the some Deepan Pachan Yoga. So we are using Panchkol, Churna, Chitrakardevati, Agni Tundevati. According to the patient's Prakriti, we are choosing any of the Deepan Pachan Yoga. Next. Then Vatanuloman. As we know, Vata is considered as the main causative factor. So Vatanuloman Chikitsa also we have to do. Next. So here are the some Vatanuloman drugs that we are using. Hingvashtak, Vati हो गई हिंगवादी चूर्ण, अभ्यारिष्ट, अविपत्तिकर, त्रिफला चूर्ण. So out of this yoga, anyone you can choose. So now coming to the Shodhana. So we are using Shodhana first line of treatment because of the correction of all the doshas. So for Shodhana, the Purva Karma is Snehan and Svedan, and after that we will choose the correct Shodhana Chikitsa. Next. So first we are doing a Snehana. After Deepana Pachan, for 3 to 5 days, we are giving Deepana Pachan. And after Deepana Pachan, we will start the Snehan Karma, followed by Svedan Karma. Next. So here are the some Snehapan Yoga that we are giving. As the patient is suffering from unovulation, so we have choose some drugs that is helpful for the ovulation. So Falagrita, as you know, it is the best drug for infertility. So we have chosen Falagrita, Shatabri Grita, Sukumara Grita. Out of this, any one we are choosing. And then according to the Prakriti, if the patient is having kapha dominancy, we are giving Vamana Karma. Next. So here are the some Vamak Dravya that we are choosing for the Vamana Karma. Madanfal, Beej, Kwatha, Sandhav, and honey. Virechan Karma. Virechana, out of some patients are not comfortable with the Vamana Karma. So in some patients, and if she is having Pitta dominancy, we are Virechan Karma for the patients. Next. For Virechan, we are using Abhyadi Mortak, Eranda Sneha, Trivritta Churna, or Trivritta Avleha. Next. If patient is not willing for Vamana and Virechan Karma, then we will go for the Basti Karma. Some patients, they don't like to have this Sneha Pans. So in such patient,
After counseling also, if she is not able to go for this karma, then we will go for the basti, and basti is considered as the best line of treatment for vata shamana. So we will go for the basti line of treatment. Next. So here is the mode of action of basti karma. How basti will stimulate and helpful for the ovulation. As we know, along with CNS, we are also having entering nervous system. So basti stimulate this entering nervous system, and this will stimulate the hypothalamus and regulate the normal functioning of HPO axis. So Anuvasana Basti, here are the some trail we are using. Narayan tail, Mahanarayan tail is also very useful because it is the best Vata Shamak. Next. Then again Uttar Basti. Uttar Basti plays a very important role in the infertility patients, and we are using this treatment more frequently as next. Here is the mode of action, how Uttar Basti will be useful in unovulation. Because Uttar Basti we are using Sneha Dravya, so it directly stimulate the uterus, and there will be a absorption of this Sneha Dravya in the uterine endometrium. Next. So here are some drugs which we are using for Uttar Basti, Palagrita, Shatabrigrita, Brahmigrita, Gogrita. Plain Gogrita also very useful in infertility patients. You can use some tela also like Mahanarayan tail, Pushpa tail, and Shatavari tail. Next. Nasya. Nasya also plays a very important role for the stimulation of HPO axis. So for unovulation, if the patient is having more psychological conditions, so in such woman, Nasya, we will plan Nasya. So Nasya will stimulate the HPO axis, and it is also useful to improve her psychological conditions. Next. Here are some Nasya Dravya we are using. Nasya with Narayan tail, Lakshmana or Godugdha or Shatpushpa tail. Acharya Kashyap has given an entire adhyay on Shatpushpa and Shatavari, and these two drugs are miracle drugs in the patient suffering from infertility. So here are some Shamana Yoga. After Shodhana Chikitsa, we will go for the Sansanjan Karma, and after Sansanjan Karma, we will go for the Shamana line of treatment. In Shamana, we have these drugs. If the patient is not comfortable with the Churna form, we will go for the Pati Kalpana. So we can choose any Shamana Aushadhi according to the Prakriti, according to the palatability of the patient. Next. We can go for Asa Varishta also, and we can give her Falagruta 5 ml BD along with the Godugdha. Next. So yoga also plays a very important role. It is also useful for to improve the psychological status of the woman. As you know, if when a woman is suffering from infertility, she will have so many psychological stress and all. So yoga definitely will be helpful for improvement of her psychological condition. So diet also plays a very important role, as in our Ayurveda, Ahara is considered as a Brahma. So we plays very important role. Dietary habits will be corrected if she is not taking healthy diet. So it also plays a very important role. Next. Pathya, we have to tell the patient what she should eat, what she should not. So here are some Pathya. So some addictions she has to prevent, like smoking and alcohol. Definitely it is affecting her fertility. Next. So now coming to the management of low ovarian reserve. So in Ayurveda, there is no any disease that we can correlate
with it, but we can consider it to somewhat with the dhatu kshay janya avastha. So for dhatu correction, we have to improve the agni, and for that we are giving deepana pachana. Then we are giving virechana also, because virechana we are giving for pitta kshamana. If any type of pitta dushti is also there, we will give virechana. Then it will also useful for the shamana of vata dosh, and basti also we can give. So mustadi yapana basti is very important because it is useful for the bala vardhana. And uttar basti also we can give to improve the dhatu kshay janya avastha. Next. So here are the some balya and burhan aushadhi, shamana aushadhi we can add. Shatavari, ashwagandha, vitari kanda, monsalas we can use. Next. Again, the correlation of luteal phase defect is again difficult. So somehow, or some condition we can correlate with putragni, yoni vyapada, vamini yoni vyapada. So the line of treatment will be, again, first we will go for shodhana line of treatment, and after that we can go for the shamana. In shamana we can give phalasarpi, kalnanak, ghrita. Next. So now I will discuss with you some of the case study that we are successfully treated the infertility patient in our hospital. The first case, the woman is suffering from infertility. Along with infertility, she had PCOD also. In PCOD, she is obese. Her secondary sexual characters was normal. Next. So as she is having kapha dominancy and obesity, so we have planned Vamankarma for this patient. And before Vamankarma, first we have given Agni Deepan and Pachan Karma. For Agni Deepan, we have given Chitrakadi Vati and Trikatu Chodna. We have given this for 3 days. Next. Then we have start Snehapan. Snehapan with Gogrita. Plain Gogrita we have used for 7 days according to the conditions. And the last Sneha dose is around 120 ml. Gradually we have increased the dose starting from 30 ml, and every day we have increased the dose. Then for Vamana, we have used this Yog Yashtimadu plus Haridra plus Grita plus Kshira plus Madhu. And she had only 4 Vamana Vega. Then we have followed, given her advice for Sansanjana Karma for 5 days. And after Vamana Yoga, we have given her Shamana Yoga. In Shamana Yoga, we have given her Dashmul Kashai, Kanchanar Goglu, Prashan Vajraras, and with the Anupan of Ushnodak. And after 4 months of follow-up, she has shown a very good, her follicular study has showed ovulation. Next. So here, what is the probable mode of action? How Vamana will be useful in PCOD patient? So as we know, the Vamana is a Kafakshama, and in PCOD there is a multiple formation of the cyst. So Vamana Karma will be useful for the Kafashaman. Kanchanar Goglu is having Bhedana property. So it is very useful in PCOD patient. Pashan Vajraras is also Krishna. So it is also useful for Granthi Bhedana. Next. And Dashmul, you know, Dashmul is the best for all types of Stri Rogas. Next. Next slide, please. So this is the second case we are discussing. She's 26 years and she's having married life of 7 years. She's a case of secondary infertility. She's also having PCOD. Next.
In this patient, we had planned Panchkarma, and for Deepan Pachan, we have used Agnitundivati and Panchkolpan. For Snehapan, we have used Bruhat Shatavrigrata and Phalgrata. Combination of these two drugs we have used in equal quantity, and it is given for 6 days, starting from 30 ml, and the last dose is around 170 ml. Then we had given Abhyanga with Dashmul tail, and then Virechana. For Virechana, we have used Abhyadi Modak, Eranta tail, Utki Churna, and Trivritta Churna. She had got 17 Virechana Vega, it was Madhyam Shakti, and then she had followed Sansarjan Karma for 5 days. Next. In Shamana Yoga, we had given Kanchana Gugulu, Varunadi Kashaya, and Pushpa Dharmaras. And after 6 months, the patient successfully conceived, and she had delivered a healthy baby. Next. And all these case studies we have properly documented, and it was our registered patient that is coming to our OPD. So here is the probable mode of action, as the Virechana is directly affecting the Agnisthana because it is considered as the best line of treatment for Pitta Dushti. Next. And we are following the Virechana as a first line of treatment for all the patients which coming to our OPD suffering from infertility. And we have got so many nice results after giving Virechana Karma. So the Shamana Yoga results will be improved after giving Virechana Karma. Next. So we have done some research work also. Last year we had one research work on Shatpushpa tail, Nasya and Madravasti in PCOS also. Here I am showing this work because the PCOS is one of the leading cause of unovulation. If we are correcting PCOS, fertility potential will be regained again. So we have used Shatpushpa tail for Nasya and Madravasti, and we have got excellent result in Nasya group. Next. One more study is going on infertility, especially on unovulation, and we have chosen Prajasthapak Grita for Uttar Basti and Garbhaprada Yug. Still the research work is going on, so I can't say, but we will see the results the next year, what are the findings and all. So till date, we have treated more than 15 infertility patients. So here we are giving some news and all in local newspaper. Next. So first of all, we are doing a Shodhana line of treatment and followed by Shamana Yoga for the infertility patients. Next. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you very much. Informative था आपका पूरा presentation. Thank you, ma'am. Yes. Any questions, doctors? Please, आपके जो भी सवाल है, please post करिएगा. Yes. Yes. Anyone? डॉक्टर गीता जी, मैं सबको अनम्यूट का ऑप्शन दे देती हूँ, आप सभी मतलब डायरेक्टली पूछ सकते हैं मैम. प्लीज अनम्यूट करके बोलिए आपको अगर कुछ सवाल पूछना है इसके बारे में, जैसे इनफर्टिलिटी में ओवुलेशन फैक्टर का इंपॉर्टेंस डिटेल में मैडम ने बताया है, पीसीओडी वगैरह सारा ट्रीटमेंट प्लान पूरा बता दिया है.
Hello. AMH level is Can high. I What? talk? Yes, ma'am. Dr. Preeti, please. Yes, myself Dr. Preeti. I'm from Mumbai. हेलो मैम, Yes. एक्चुअली मुझे पूछना था, ये एएमएच वैल्यू लो है ना, उसका कैसे हम स्टडी कर सकते हैं और उसमें कैसे ट्रीटमेंट दे सकते हैं लो एएमएच वैल्यू? आप डायरेक्टली उसकी हार्मोनल स्टडी करवाइए ना, यू कैन राइट डाउन एएमएच, आप उसकी टेस्ट करवा लीजिए, उसमें आपको पता चल जाएगा वेदर शी इज हैविंग लो वैल्यू एंड हाई वैल्यू। नहीं, एक मेरी पेशेंट है, उसका लो एएमएच वैल्यू है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? कितना थोड़ा सा उसका है। हेलो। लो है यानी कितना लो है, उसमें भी एक रेंज आता है। 0.9, 0.9, 0.9। 0.2 to 0.7, ठीक है जी, 0.9 आ रहा है ना, तो आप पहले उसका देखिए कि वेदर शी इज ओबेस और लीन और टीन, क्या लग रहा है आपको, उसकी प्रकृति कैसी? वो शी इज कुमार, नो ओबेसिटी एंड पित्त प्रकृति है उसका। उसको मोस्टली अर्टिकेरिया के प्रॉब्लम बीच में हुआ था, फिर उसको थोड़ा सा हार्ट बर्न रहता है, एसिडिटी जैसा। और ये जो उसको जॉन्डिस हुआ था 4 साल पहले, अभी उसको शादी को 4 साल हो गए। और एक बार ही उसने हार्मोन का एक्सटेंड पीरियड उसने एक ही बार टैबलेट लिया था। तो बाकी उसने ऐसे बाहर का कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स वगैरह नहीं लिया है। और प्रोलैक्टिन लेवल उसका बढ़ गया था, लेकिन अभी वो नॉर्मल है। प्रोलैक्टिन नॉर्मल है, एएमएच इज लो, है ना? व्हाट अबाउट HbA1c? It is also normal. It is negative, HbA1c negative. Yes, yes. ओके, तो आप जैसे आप बता रहे हो कि शी इज हैविंग पित्त दृष्टि, है ना, उसको एक्ने प्रॉब्लम, अर्टिकेरिया हो रहा है, हार्ट पर, तो कहीं ना कहीं पित्त दृष्टि तो है ही है। तो एक बार आप उसका एक प्रकृति उसकी देख लीजिए, है ना, हम उसका एक बार माइल्ड विरेचन करा सकते हैं। अभी जब भी थोड़ा सा क्लाइमेट थोड़ा ओके हो जाए, कैसा क्लाइमेट है अभी, रेनी स्टार्ट हो गया है बॉम्बे साइड, ओके, है ना, तो एक बार उसको पहले आप विरेचन करा के, विरेचन के बाद में उसको फिर आप शमन औषधि दीजिए, है ना, एंड आफ्टर 3 मंथ्स, विरेचन के बाद में 3 मंथ्स शमन योग देने के बाद अगेन यू हैव टू गो फॉर दिस एएमएच लेवल। पहले एक बार करवा लीजिए विरेचन से पहले, एंड देन यू सी वेदर देयर इज एनी अल्टरेशन इन द रिपोर्ट एंड। ओके मैम, शमन औषधि में क्या प्रेफर कर सकते हैं मेडिसिन? मैंने इतने सारे बताए हैं अकॉर्डिंग टू योर पेशेंट्स पैलेटेबिलिटी, है ना। अब मैं कह दूंगी आप उसको फल घृत दो और पेशेंट खा के वॉमिट कर रही है, तो है ना, आप पेशेंट डील कर रहे हो, जो उसको इजी वे में वो ले सकती है ना, वेदर शी इज टेकिंग पुष्प धनवरस अगर वो ले रही है तो आप वो दे दीजिए। अगर पेशेंट कंफर्टेबल है घी लेने में तो आप उसको फल घृत दे दीजिए, अकॉर्डिंग टू पेशेंट विश। अगर आपको लग रहा है कि वो सो नहीं पा रही है तो आप कोई आसो वरिष्ठ ऐड कर दीजिए, तो थोड़ा सा उसको नींद में भी मैम उसको है ना एक प्रॉब्लम भी है कि उसको ना स्वप्न बहुत आते हैं, ऐसे नींद नहीं आती, स्वप्न बहुत। हाँ डेफिनेटली ना, फ्रेंड्स की सफरिंग फ्रॉम इनफर्टिलिटी कैसे नींद आएगी, है ना, तो साइकोलॉजिकली डिस्टर्बेंस तो रहेगा, तो आप उसको नस्से भी दे सकते हैं, है ना, एक बार विरेचन दे के आप उसको फिर नेक्स्ट साइकिल नस्से भी दीजिए, तो उसके लिए साइकोलॉजिकल जो है ना, या आप उसको प्रतिमर्श नस्से के लिए भी एडवाइस कर सकते हैं। प्रॉपरली आप उसको बताइए कि घर पे भी वो अनुतेल का नस्से ले सकती है, पर आपको उसको बताना होगा कि भाई व्हाट शी हैज टू डू, है ना, कि जब अगर हेड बाथ ले रहे हैं तो नहीं डालना है, एकदम क्लाउडी क्लाइमेट है तो हम नहीं डालना है, तो वैसे भी आप कर सकते हैं, घर पे भी उसको एडवाइस कर सकते हैं, और या फिर आप उसको प्रॉपरली 7 डेज का नस्से भी दीजिए, तो उसका ये जो साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम है, नींद नहीं आ रही है, और साथ में उसको कुछ प्राणायाम बताइए, है ना, तो अगर वो काम नहीं रहेगी तो डेफिनेटली वी विल नॉट गेट द। ओके, ऐसे प्राणायाम में कौन से अच्छा रहता है इनफर्टिलिटी में, जैसे अनुलोम विलोम भ्रामरी? वो भी अब जैसे मैं उसको कह दूंगी कि भाई आप सूर्य नमस्कार करो, पर पेशेंट को नहीं होगा ना, अगर वो नहीं कर पा रही है, सूदिंग एकदम स्मूथ वे में आप उसको डीप ब्रीदिंग बता दीजिए, है ना, 5 मिनट के लिए उसको आप उसको कुछ त्राटक ही बता दीजिए, उसका थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन भी थोड़ा बढ़ेगा।
ओके तो मैडम, ये AMH वैल्यू इज रिलेटेड टू द प्रॉपर ओव्यूलेशन इज नॉट मिस ये देखिए पहले के जमाने में कहाँ थे ये हाँ। हार्मोनल, अभी तो नए 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 चीजें आने लगी। ये हमारे लिए एक डायग्नोस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू है, बट टोटली हाँ। यू शुड नॉट डिपेंड ऑन दिस, ठीक है ना। अब हम्म, AMH को हम इतना इम्पोर्टेंस ना देके हम उसकी जो साइकोलॉजिकल कंडीशंस है और उसके ज्यादा से ज्यादा हम उसकी जो ओव्यूलेशन स्टडी है ना, फॉलिकुलर स्टडी, उसको हम ज्यादा हाँ। फोकस करें तो बेटर रहेगा, क्योंकि हार्मोन लेवल तो हर महीने बदलते रहेगा, हाँ है हाँ। ना। तो इसको ओके। इतना इम्पोर्टेंस ना देते हुए हाँ हाँ। वी विल कॉन्सेंट्रेट सम अदर थिंग्स, ठीक है ना। तो फॉलिकुलर स्टडी में जो फॉलिकल साइज प्रॉपर हो गया तो हाँ, आप 10th डे से लेके आप 16 डे के बीच में करवा लीजिए, है ना, ओके whether the follicle is rupturing or not। इसमें आप TDS ही प्रेफर करिएगा, डोंट गो फॉर द ट्रांस एब्डोमिनल, ट्रांस ओके वजाइनल विल बी अ बेटर फॉर द डायग्नोसिस, ठीक है ना। ओके। और वो फिर उसके लिए प्रॉपर वो जो आपने अभी नोवुलेशन में जो जो ड्रग्स प्रिस्क्राइब किए वो उसमें से हम यूज कर सकते हैं ऐसी सिचुएशन में ना? हाँ जी, वो- बहुत सारी हाँ। ड्रग्स है हमारे पास मल्टीपल ड्रग ऑप्शंस है, ठीक है ना। राइट। ओके मैम, ये स्त्री वंद्यत्व हरिभूत पापेश्वर का जो कॉम्बिनेशन है वो आपका एक्सपीरियंस है उसके बारे में कुछ ऐसे? तो प्रोफेशन नो, हाँ एक्चुअली वी आर बिलोंगिंग, हम तो राजस्थान में, और वो इतने आई प्रेफर मोस्टली शास्त्रोक्त योग। राइट राइट। ओके मैम, हाँ, फाइन फाइन। मैंने नहीं यूज किया, सो आई कांट से। ओके मैम, चल थैंक यू मैम, थैंक यू सो ओके, मच। थैंक यू। एनी मोर क्वेश्चंस? डॉक्टर उज्ज्वला जी। मैम ओव्यूलेशन में 13-14 mm से आगे नहीं जा रहा है तो उस टाइम बीज बढ़ाने के लिए क्या दे? बीज पुष्टि करने के लिए, ओके, यस हाँ। मैम प्लीज। वैसे आप क्या देते हो? नहीं, पहले तो उस टाइम तो मैं चित्रकारी या तो बढ़ाने के लिए देती हूँ, पर आप उससे उसमें नहीं बढ़ रहा है। हाँ। उसमें आप नहीं बढ़ रहा है तो एक बार आप त्रिकटु दे के देखिए, त्रिकटु, ठीक है ना, त्रिकटु चूर्ण आप दे के देखिए। पर आपको उसको 3 साइकिल, मिनिमम 3 साइकिल्स तक देना होगा, ठीक है। और उसमें आप प्रकृति जरूर देखिएगा, इफ शी इज हैविंग पित्त प्रकृति और सम हार्टबर्न प्रॉब्लम तो उसका डोज आपको थोड़ा सा देख के फिर आप, जैसे अगर आप उसको चित्रकारी दे रहे हो तो मे बी शी इज नॉट हैविंग प्रकृति, ठीक है ना, तो वो भी आप ओके एक बार ऐड करके देखिए। ओके। मैम एमएस डाउन में उसमें मैं बस्ती योग बस्ती देती हूँ तो वो भी चलेगा ना साथ में? हाँ हाँ, कोई भी दे सकते हैं आप, हाँ। पंचकर्म में जो आपको सुटेबल लग रहा है, क्योंकि बहुत से पेशेंट है वो घी नहीं पीना चाहते, है ना, डायरेक्टली दे विल से कि वी आर नॉट कंफर्टेबल विद ड्रिंकिंग दिस, तो हम लोग फिर बस्ती तो बेटर है ना, उसमें पेशेंट को ओके रुकना भी नहीं पड़ता है, घर भी चली जाएगी, ज्यादा पथ्य भी नहीं फॉलो करना है। स्नेहपान में तो आपको उसको 15-20 दिन तक सिर्फ गर्म पानी और यूश और यही सब देना पड़ता है, बस्ती इज मोर कंफर्टेबल, दे सकते हैं। ओके। मैडम अभी अगर तो बहुत एएमएच ही लेवल हाई हो तो क्या करना चाहिए? तो पीसीओडी है। और हम लोग एमएच पे अटके पड़े हैं बहुत सारी हाँ तो चीजें हैं, पीसीओडी और है। वो तो सेम है, लो है या हाई है ना, वी हैव टू गो फॉर शोधन एंड शमन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, उसमें ऐसा कुछ नहीं है कोई कि यू हैव टू, यू कांट डू दिस और दैट, है ना। आप अपने हार्मोनल इम्बैलेंस है, मींस एचपी एक्सिस इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, तो आप उसके लिए शोधन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट फॉलो करिए, देन गो फॉर शमन। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि एक शोधन से हमें इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सिर्फ वमन से नहीं, तो उसमें आप नस से दे सकते हैं, या उसके बाद आप नेक्स्ट साइकिल बस्ती प्लान कर सकते हैं, तो अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन। सीधे उत्तर बस्ती नहीं है, उत्तर बस्ती को तो हम बोल ही नहीं सकते, है ना, गो फॉर उत्तर बस्ती। मैम स्टार्टिंग में कौन से इन्वेस्टिगेशंस करने चाहिए? स्टार्टिंग में डायरेक्टली यू डोंट गो फॉर दिस हार्मोनल एंड ऑल, है ना, पहले एक प्राइमरी लेवल पे सीमेन एनालिसिस करा लीजिए हस्बैंड का, एंड फॉलिकुलर स्टडी, ठीक है, तो आपके
within 2000 under 2000 it will be over. प्रीवियस पूरा एक महीने का जो साइकिल है उसमें करवाने के लिए 2000 2500 तक आ जाता है. Then you will get the idea, ठीक है ना, whether she is ovulating or not. उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि then start our शमन योग, शमन शोधन करके देख लीजिए. अगर आपको नहीं रिजल्ट आ रहे हैं, कुछ भी चेंजेस नहीं मिल रहे हैं, देन गो फॉर हार्मोनल. वैसे तो पेशेंट हमारे पास जब आता है पूरी की पूरी फाइल लेके आता है, कभी भी फ्रेश पेशेंट आता ही नहीं हमारे पास, है ना. तो ऑलरेडी सब हार्मोनल टेस्ट करे हुए होते हैं. तो वी विल गेट द आइडिया वेदर शी इज हैविंग हाइपरप्रोलैक्टिन और ऑल एंड टेस्टोस्टेरोन. तो वो हार्मोनल टेस्ट कराने की हमारे पास जरूरत नहीं, बिकॉज ऑलरेडी आईवीएफ वगैरह करा के ही पेशेंट आता है. वी नेवर गेट अ वेरी फ्रेश पेशेंट, है ना. तो हमारे पास क्रॉनिक और कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट ही आएगा एंड शी विल ऑलमोस्ट ऑल हैविंग ऑल द रिपोर्ट्स. फिर आप देख लीजिए कि व्हाट इज द नीड. कुछ एक लैब टेस्ट में अगर आपको करवाना है तो वो आप करवा लीजिए. राइट. मैम आप पीपीटी शेयर कर सकती है क्या, क्योंकि बहुत फास्ट हुआ तो कुछ. पीपीटी मैंने मैम को दिया है. अच्छा. यू कैन आस्क, नो प्रॉब्लम, यू कैन टेक पीपीटी. थैंक यू मैम. डॉक्टर रेनू जी. नमस्कार मैम. हाँ बताइए, पूछिए. मैम मुझे ये पूछना था कि मेरी एक पेशेंट है, तो उनका क्या है कि पहले वो ओबेस थे थोड़ा, अभी तो ठीक है, एनेस्थीसिया वगैरह चल रहा है, तो एक बार वमन भी हुआ उससे ठीक है. पहले जैसे 6 मंथ पे पीरियड्स आते थे, अभी 90 डेज पे हो रहा है. तो अभी ये जो साइकिल है मैम, इसको रेगुलर करने के लिए क्या करना चाहिए? अभी ओबेस नहीं है ना पेशेंट? इज नहीं मैम, अभी वेट काफी लो हुआ है उनका. पीरियड्स मींस क्या मैम पीरियड्स जैसे पहले तो मतलब हार्मोन पिल्स लेनी ही पड़ती थी. अभी जैसे 2 से 3 महीने से अपना ट्रीटमेंट चलाया है, तो उससे अभी 90 डे पे पीरियड्स आ गए. अच्छा, 3 मंथ्स आफ्टर 3 मंथ्स. यस मैम. ओके, तो आप उसको जो यूट्राइन टॉनिक्स है ना, यू यस कैन मैम. ऐड. PCOS जो है भी है उनका. कि हम उसको कुमारी आसो यू कैन ऐड, है ना. यस मैम. एंड यू कैन गिव लक्षणादिवती. जी मैम. ठीक है. और अगर आपको लग रहा है कि जो पीरियड की जो डेट है उसके बाद अगर नहीं आ रहे हैं, 7 डेज वेट करके फर्स्ट यू गो फॉर यूपीटी, है ना. इफ इट इज नेगेटिव देन हाँ फिर जी आप मैम. एक कृष्ण तिल को आप ऐड कर सकते हैं. ठीक है मैम. ठीक है ना. तो आर्तो प्रवर्तक है, पेशेंट का पीरियड भी आ जाएगा रेगुलरली. मैम वैसे पेशेंट को थोड़ा गैस्ट्रिक और एसिडिटी का प्रॉब्लम रहता है. वो तो आप उसकी डाइट को अगर कंट्रोल करोगे यस ना, मैम. हाँ कोई जी. दिक्कत नहीं है. और वैसे भी कृष्ण की बात हमको कौन सा महीना भर लेना है, वी हैव टू टेक ओनली फॉर 3 डेज. हाँ जी उस टाइम आप डाइट कंट्रोल मैम. कर 3 लीजिए. डेज तक दे सकते हैं. हाँ, 3 to 4 days. no, only for 3 days and once in a day, only for 1 day. Once in a day. हाँ, Okay. once in a day. Thank you मैम. मैम फिर भी नहीं आया तो मासिक नहीं आया तो we have to give down. आएगा. नहीं है. सीधी मेरा एक बात है. पेशेंट है चॉकलेट सिस्ट का, देखो वो आप फिर भी नहीं है. ये इस मंथ इस वीक के 3 डेज कंप्लीट हो गए, है ना. वेट फॉर 4 days. इफ इट इज नॉट कमिंग, नेक्स्ट वीक अगेन स्टार्ट फॉर 3 days. ओके. हाँ, यू हैव टू रिपीट अगर नहीं आ रहा है पेशेंट. ठीक है ना. पर उसके साथ यू हैव टू कीप सम थिंग्स इन माइंड कि अगर वो पेशेंट जो डाइट ले रहा है ना, अगर वो दही और उसके साथ अगर कुछ ठंडा ले रही है, इधर हम लोग उसको गर्म दे रहे हैं, आर्तो प्रवर्तक दे रहे हैं, राइट. शी इज यूजिंग समथिंग लाइक दिस जो उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, तो वो चीज भी आपको क्लियर करना है ना. पेशेंट को बताना है कि आप ये सब चीजें उस टाइम पे ना खाइए, हम आपको गर्म ही दे रहे हैं, तो आप गर्म चीजें ही लीजिए. ये सब आप थोड़ा सा देख रहे हैं तो वो क्या है, काउंटर बैलेंस हो जाएगा. क्योंकि पेशेंट ना पथ्य फॉलो नहीं करते हैं, तो थोड़ा सा इस पे भी आपको कॉन्सेंट्रेट देना चाहिए. मैम जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल में कुछ मेडिसिन चेंज होते हैं. साइकिल मींस लाइक फर्स्ट 10 डेज में कुछ अलग मेडिसिन, फिर आगे कुछ अलग, ऐसा कुछ होता है क्या? दैट डिपेंड्स अपॉन द पेशेंट कंडीशन, है ना. अगर उसका ओवुलेशन नहीं हो रहा है, अगर आपको लग रहा है कि फॉलिकल साइज इज ओके,
बट फॉलिकल इज नॉट रप्चरिंग, तब आपको वहाँ पे कुछ कृष्ण ड्रग्स ऐड करने पड़ेंगे 12th डे 14th डे, वो हर पेशेंट पे वेरी करेगा। और कोई पेशेंट में जरूरत नहीं है तो नो नीड टू ऐड, यू कैन कंटिन्यू द सेम मेडिसिन। हेलो मैम। यस मैम, मेरा एक बेसिक क्वेश्चन है। जैसे यंग गर्ल्स में अभी पीसीओडी और इरेगुलर पीरियड्स का प्रॉब्लम बढ़ गया है, तो उनमें क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस करने हैं और स्कैनिंग कब एडवाइस करना है? स्कैन मींस विच फेज में एडवाइस करना है? पीसीओएस का जो पेशेंट है, शी इज सफरिंग फ्रॉम अमीनोरिया, ठीक है ना, तो मैम बेटर आवाज है। नहीं आ रही है। हेलो, हाँ। पीसीओएस का पेशेंट है तो डेफिनेटली शी विल हैव अमीनोरिया, है ना। तो व्हेन द इफ द पेशेंट इज हैविंग जस्ट शी इज कंप्लीट हर मेंस्ट्रुएशन, तो उसके बाद हम प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज अगर फर्स्ट टाइम हम कर रहे हैं तो वी हैव टू वेट वेदर शी इज गेटिंग हर साइकिल। जब पीरियड्स आ जाए उसके बाद अगर हम 14th डे अगर हम करवा रहे हैं, वी विल गेट द एक्चुअल condition. So it's better after menses you have to go for the scanning. आफ्टर मेंसेस ऑफ 14th डे। 14th day, 12th, yeah, 12th day, 14th day, ठीक है। फर्स्ट यू हैव गो फॉर दिस यूएसजी। उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि यूएसजी फाइंडिंग इज नॉर्मल, तो फिर देन यू हैव टू गो फॉर द हार्मोनल एसिड। और अगर उसकी यूएसजी फाइंडिंग में भी अगर पीछे सजेस्टिव आ रहा है, तो देन अगर पेशेंट अफोर्डेबल है तो आप करवा सकते हो हार्मोनल एसिड। अदरवाइज आप एक बार का अपना 3 months का कोई शमन योग देखिए, शोधन चिकित्सा देके देखिए। अगर आपको कुछ भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है, देन यू गो फॉर द हार्मोनल एसिड, क्योंकि हार्मोनल एसिड में हमें बहुत सारे करवाने पड़ेंगे। आपने देखा होगा उसमें एफएसएच है, एलएच है, टेस्टोस्टेरोन है, देन थायराइड आल्सो यू हैव टू गो, है ना। तो बहुत सारे हार्मोनल टेस्ट, प्रोलैक्टिन आल्सो यू हैव टू गो, इंसुलिन लेवल भी देखना है, बहुत सारी टेस्ट है हार्मोनल। तो पेशेंट के लिए एकदम से कॉस्टली हो जाएगा। ओके मैम। मैम और एक क्वेश्चन था मेरा, नॉट रिलेटेड टू इनफर्टिलिटी। एक पेशेंट है 40 इयर्स, उसका पीरियड्स मतलब रेगुलर है पर थोड़ा स्कैंटी है, ओनली 2 days ब्लीडिंग रहता है एंड स्कैन फाइंडिंग शोज बल्कि यूट्रस 15.6 mm और बायलैटरल पॉलीसिस्टिक ओवरीज है and right cyst measures 31.1 by 24.4 and 17.7. उसका ईटी आ रहा है 15.6 6 मैम। एंड मैम उसके एक्चुअली पीरियड से पीएमएस से थोड़ा सा ब्रेस्ट पेन रहता है, बाकी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। पीरियड्स थोड़ा सा मतलब स्कैंटी रहता है और 2-3 दिन ही ब्लीडिंग होता है और उसको एक्ने है, सिस्टिक एक्ने है। और बाकी मैंने उसके सब लक्षण देखे तो जैसे बर्ब्स आना है, पूरे मतलब कभी जॉइंट्स में पेन है, बैक पेन है, तो मैंने उसको षडधरण स्टार्ट किया था और रासना सप्तक शुरू किया था और चंद्रप्रभा, क्योंकि उसको यूरिन में भी बहुत टर्बिड यूरिन था बोल रही थी, पर इन्वेस्टिगेशन वाज नॉर्मल और उसको टाइम लगता था। तो पूरा अपान दृष्टि और मलबद्धता भी था थोड़ा, पर उसको है ना उससे बहुत एक्ने ज्यादा हो गए थे। जैसे मैंने उसका पहले दीपन पाचन इसकी वजह से किया था, तो जैसे आमाशयगत वात कंसीडर करके, सामवात कंसीडर करके। तो उसका एक बार तो आप पहले CA 125 करवा लीजिए, क्योंकि ईटी जो है 15 अराउंड आ रहा है, ठीक है ना। एक क्या बार करना है मैम? CA 125 सीरम मार्कर करवा लीजिए उसका। ओके मैम। हाँ एंडोमेट्रियम थिकनेस थोड़ी ज्यादा आ रही है ना, और हाँ ओवरी की साइज भी है, हाँ और हाँ। वो मेनोपॉजल फेज में अगर जा रही है। शी इज 40 years मैम। हाँ, तो आजकल तो मेनोपॉज अर्ली एज में भी आने लगता हाँ है। आप देखिए तो कहीं हॉट फ्लशेस, PMS से कहीं हम मेनोपॉजल सिम्टम्स में तो कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं, वो देख उसको लीजिए आपको। हॉट फ्लैशेस कुछ भी नहीं है, पीरियड्स मतलब 2 दिन ब्लीडिंग रहता है, 5th डे तक स्पॉटिंग रहता है। नो नीड,
आप उसको कुछ मत करिए, ठीक है ना। बल्कि यूट्रस है तो आप उसको थोड़ा सा दशमूल दे दीजिए, ब्लीडिंग इंक्रीज करने के लिए कुछ मत दीजिए, ठीक है ना। और थोड़ा हाँ योगा और डाइट एडवाइस कर दीजिए। हाँ, उसका अभी 73 था वेट, तो मैंने डाइट एडवाइस करके अभी 20 डेज में 69 kg हुआ है उसका ठीक है, वेट। बढ़िया बढ़िया है। ओके मैम, ओके, सो एनीथिंग टू बी एडेड टू रिड्यूस 80? दशमूल, दशमूल दशा, दिस मच इज इनफ मैम? हाँ, फॉर 3 months कंटिन्यू। Continue 3 months for cyst 15, and bulk uterus. या Okay ma'am, thank you so much. मैम टेस्टोस्टेरोन लेवल डाउन करने के लिए और कोई हीटोइज्म में? देखिए, अब जैसे ये तो ओवरऑल अगर हमारा हार्मोन सही होंगे ना तो सब सही हो जाएगा, है ना। तो उसके लिए आप, अगर आपको लग रहा है कि बहुत ही हाई लेवल टेस्टोस्टेरोन लेवल है, पेशेंट के फेशियल हेयर्स इज वेरी प्रोमिनेंट, यू गो फॉर द शोधन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। उसमें भी, शोधन में भी आपको पहली सिटिंग में फायदा नहीं मिलेगा, हो सकता है हमें और भी उसमें करवाना पड़ेगा पंचकर्मा, है ना। सिर्फ वमन करा के, विरेचन हाँ करा के नहीं करना पड़ेगा, द ड्यूरेशन विल बी लॉन्ग। एंड वंस the all the hormones is working properly, तो टेस्टोस्टेरोन अपने आप हो जाएगा। इसलिए स्पेशली टेस्टोस्टेरोन के लिए कुछ नहीं है। अच्छा, बाकी का तो हो गया, वो प्रेगनेंसी भी कंसीव नहीं हो रही है, हार्मोन बाकी का सही है, टेस्टोस्टेरोन बढ़ा है। हाँ, तो उसके एम लिए आप उसका एक बार शोधन कराइए आप उसका। हाँ वो सब करवा दिया, विरेचन, बस्ती का, साइकिल युग बस्ती का, वो सब किया। उत्तर एमएच डाउन था, वो नॉर्मल हो गया, 0.1 से 1.25 हो गया। उत्तर बस्ती नहीं किया। हाँ, वो करिए अब, ओके। और ऐसा क्या खा रही है वो एंड्रोजन एक्सेस वाला, उसको एक बड़ी हेल्दी डाइट पे फोकस करवाइए, ठीक है ना। हाँ वो ओके। सो आई थिंक मैडम बहुत अच्छे से आपने सभी हमारे वैज्ञों के सवालों का जवाब दे दिया है। सो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर रश्मि जी। मैम मेरा एक क्वेश्चन था, पूछूं? हाँ यस प्लीज, जस्ट लास्ट वन। हाँ यस मैम। मैम, जो निद्रानाश, जैसे एंजाइटी रहती है ऐसे पेशेंट में, तो निद्रानाश में हम आसवारिष्ट सजेस्ट करते हैं, तो मेरा एक बेसिक क्वेश्चन था कि ये कैसे एक्ट करते हैं। मेनली तो वात दृष्टि से ही मतलब जो निद्रानाश होता है ना, मतलब तो आसवारिष्ट कैसे एक्ट होते हैं, ये मेरा क्वेश्चन था ना। आपका एक तो क्वेश्चन ही ये गलत है, क्योंकि हम निद्रानाश है तो हम Actually, पेशेंट को आसवरिष्ट देंगे, जरूरी नहीं है ना, बिल्कुल हाँ। जरूरी नहीं है। किसने कहा कि अगर पेशेंट को निद्रानाश है तो हम आसवरिष्ट दें? हम और भी बहुत सारी चीजें, पेशेंट को हम योग के लिए कॉन्सेंट्रेट करेंगे, उसका जो साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस है उसके लिए हम उसको काउंसलिंग करेंगे, ठीक है ना। और आप उसको नस्य दीजिए ना, डोंट गिव आसवरिष्ट, नो नीड टू गिव आसवरिष्ट। आप उसको प्रतिमंश नस्य के लिए सजेस्ट करिए, वो घर पे भी कर सकती हैं। उसके जो भी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस है वो पेशेंट को बता के आप उसको प्रतिमर्श नस्य के लिए सजेस्ट करिए। रात के समय ऐसी कोई चीज जो उसको अफेक्ट कर रही है ना, उसके एंजाइटी और उसके साइकोलॉजिकल लेवल को डिस्टर्ब कर सकती है, उसके लिए आप उसको थोड़ा सा डाइवर्ट करिए। हमारे तो एकदम सिंपल से बताया है कि पादाभ्यंग करके सोइए, आपको नींद अच्छी आएगी। तो आप वो बताइए उसको, गाय से सिंपल गाय के घी से तलवे के नीचे मालिश करके सो जाए, है ना। नस्य करेगी और योगा और प्राणायाम करेगी, सो डेफिनेटली शी विल गेट बेटर स्लीप। ओके मैम, उससे भी अगर थैंक आपको यू। नहीं, उससे भी अगर आपको रिलीफ नहीं मिल रहा है तो गो फॉर धारा, शिरोधारा। ओके मैम, थैंक यू। डॉक्टर सिया जी, what you want to ask? Yes. हेलो मैम। यस मैम। हाँ मैम प्लीज। मेरा एक क्वेश्चन था। मेरी एक पेशेंट है, उसका 33 इयर्स एज है उसका। अभी वो, उसको सर्वाइकल पॉलिप भी है, बहुत फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है उसके, और तीसरी कंडीशन है कि उसको सिंपल सिस्ट है और फाइब्रॉइड भी है, और वो कंसीव करने के लिए मेरे पास आई थी, मतलब तो उत्तर बस्ती का ट्रीटमेंट किया है उसका, 3 सेशन हुआ है उसका उत्तर बस्ती का, और इंटरनल मेडिसिन भी स्टार्ट है उसका। तो आगे क्या कर सकते हैं हम उसके बारे में? पॉलिप के होते हुए आपने उत्तर बस्ती कर दी उसकी? मैम मुझे, मतलब वो रेफरल पेशेंट थी, उनके डॉक्टर ने बोला था कि
उत्तर बस्ती कर दो ऐसे करके, इसलिए I'm फिर just asking you कि how it is possible if she is having fibroid, if she is having polyp, आप कैसे उत्तरवस्थी किया है आपने? सर्विक्स तक किया है, whether it is intrauterine, क्योंकि भाई जब तक फॉरेन बॉडीज है ना, अच्छा अच्छा क्षेत्र में इतने सारे दुष्टि है, हम्म कहाँ से वो कंसीव करेगी बताइए आप? और वो पॉइंट ठीक है मैम, लेकिन उनके डॉक्टर ने बोला था और वो बहुत ही कोई कुछ भी फोर्सफुली कह उन्होंने, देगा तो हम वी विल नॉट फॉलो ना, कोई हमें कुछ भी हाँ कह देगा फिर हमें डीफेम मिलेगी ना। जब तक आप ओके फ्री साइकिल उत्तरवस्थी कर रहे हो क्या हाँ फायदा ना। अच्छा तो उत्तरवस्थी तो हमारे यहाँ रामबाण औषध है ना, लास्ट हमारे लिए हथियार ही है। वो आपने अच्छा फेल कर दिया तो पेशेंट का भी फेथ खत्म हो जाएगा ना। वही मैम और आपने किया ही क्यों, क्योंकि हम कर ही नहीं सकते इस कंडीशन। पहले अच्छा आप उसकी हिस्ट्रो या लेप्रोस्कोपी करवा के आप उसके पॉलिप रिमूव करवाइए, फाइब्रॉइड जो है मायोमेक्टम करके रिमूव करवाइए, फिर उसका अच्छा शोधन करके देन यू गो फॉर द उत्तरवस्थी। अभी ओके तक आप मैम कुछ नहीं कर सकते हैं, ऑलरेडी यू हैव डन व्हाट यू हैव टू। ओके फिर इंटरनल मेडिसिन में फिर क्या दे सकते हैं मैम फिर भी? कुछ भी नहीं अफेक्ट करेगा जब तक आप ये चीजें नहीं कर पाओगे। ओके 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 मैम ठीक है। सो आई थिंक आज का हमारा ये सत्र बहुत ही सफल रहा है। सो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर रश्मि शर्मा जी फॉर योर प्रेजेंस एंड वेरी गुड गाइडेंस फॉर अवर वैद्यास। सो आज का ये सत्र बहुत ही लाभदायी रहा। तो बहुत बहुत आभार आपका, और आयुष दर्पण की तरफ से भी मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ। आपने यहाँ आकर अपना समय भी दिया और अच्छे से मार्गदर्शन भी किया। तो ये पीबी तिवारी लेक्चर सीरीज हम लोग काफी दिनों से चला रहे हैं, जैसे कि मैडम का नाम काफी है गायनिकी क्षेत्र में, और आगे भी अगला सत्र होते रहेगा। आज हमने जैसे डिस्कशन किया है वैसे ही हमारा रोज गायनेकोलॉजिकल संभाषा इस आयुष दर्पण के प्लेटफॉर्म पर चलती है, जो कि एक बहुत ही आई थिंक कहीं पर ऐसी गायनेकोलॉजिकल संभाषा नहीं चलती होगी। और लगभग हमने टोटली आई थिंक पूरा 10-11 महीने हो गए हम लोग इस सत्र को चला रहे हैं। तो आप सभी का सहयोग हमेशा से रहता ही है, आगे भी ऐसे ही सहयोग बनाकर रखिएगा और हमारे साथ इस मंच पर जुड़िएगा। अपने अनुभवों को, अपने केसेस को आप यहाँ पर शेयर कर सकती है, और हम लोग यहाँ पे डिस्कशन के साथ साथ आपका जो भी सवाल होता है मार्गदर्शन हम लोग करने का प्रयास करते रहते हैं। तो इस प्रकार से इस महीने में, जून के महीने में आप भी आ सकते हैं, जैसे हमारे सभी लोगों ने यहाँ पर डिस्कशन किया, इस सत्र में आप भी अपना लाभ ले सकते हैं। तो बहुत बहुत आभार मैम, डॉक्टर रश्मि जी, आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच फॉर द सेशन, वंडरफुल सेशन, थैंक यू। तो आज के लिए रुक जाते हैं, कल फिर मिलेंगे हम लोग और नेक्स्ट सीरीज में। हमारा नेक्स्ट सेशन रहेगा 8 तारीख को, 8 जून को पीवी तिवारी लेक्चर सीरीज का नेक्स्ट सेशन रहेगा। ठीक है, फिर शुभ रात्रि सभी को। आभार सभी का, सभी वैद्यों का भी आभार, जो भी सारे हमारे वैद्य फेसबुक पर भी देख रहे हैं ना इस सत्र को, उनका भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ। और आज के लिए रुकते हैं, नमस्कार, थैंक यू।